make AI understand. The human factor will be more powerful. For what purpose brands use YouTube? Instagram pe I go and have fun. Ashneer Grover, who used to be an amazing businessman. For Right. example, Real Hit Real Talks. Hit Talks. Yeah. Yeah. Every guy who starts a business is a creator. Why brands make content on Instagram? Right. Okay, cool. So basically, following to this, there are a lot of brands. Basically, like for every startup that has been launching recently or is launched, I think in past 2-3 years, they're happily going after creating content on Instagram. Like Instagram as a platform has become a mandatory thing. But when it comes to YouTube, it is still the way gise bite videos, Right. featured videos, product videos, and all of videos. that. So what do you think? Like, why is that mentality still there? And how do you think that? Like, do you actually think this number is going to increase? Like, more number of brands will start to actually believe in YouTube as a platform to actually sort of acquire customers. Sure. So I'll share. I'll answer the first part of your question, Yeah. which is why brands make content on Instagram rather than YouTube as a platform. So there's two things here. एक तो chain effect है. Because my competitor is present on Instagram and is doing fairly well on Instagram, I'll also try to repeat that. Second is it's very easy as a platform. If let's say I want to be a creator on Instagram, it's very easy, very handy. Plus, let's say supposingly, if I'm a social media manager, I have a lot of options to post on Instagram. So I can post a static post. I can probably post stories of my product offers, or I'm just making reels. Now, reels is again a slightly tough part than the rest of it, but they have options there. What happens to YouTube is YouTube पे पहले community tab नहीं दिया जाता था to the new channels that were forming. It has to have like 1,000 subscribers. Right. और stories भी नहीं दिया जाता था till 10,000 subscribers. Right. So that came as a bottleneck to people posting content which is, let's say, not video. If I, let's say, want to post a static post, how do I post it? If I want to post story, which is easier for me. Correct, a quick update. तो कैसे करूँ मैं? Then they came up with shorts, and now the story, so coming to now answering to your second question, which is, will that change? So I would want to share some statistics as well. मैंने जब भी YouTube पे काम किया है तो एक ही चीज पे किया है, which is to get more customers for my clients product or services that they are selling, right? तो वहाँ पे I have seen that any social media and YouTube, if you compare, if you mix all of the social media and compare it with YouTube, still they are lesser in terms of customer acquisition numbers than to comparing it with YouTube. अब ये क्यों होता है? Whenever, so let's say, how do we treat social media? Instagram पे I go and have fun, watching, entertain myself with reels, and I don't know what I'm consuming. I'm expecting something great, but I don't know what next reel is about. If I go to any other social media, let's say LinkedIn for an example. So if I go on LinkedIn, मैं फिर भी scroll कर रहा हूँ, I don't know what I'm going to get from that platform, right? So is the thing with other social media as well. But when it comes to YouTube, YouTube is the largest search engine in the world after Google, right? So people are going with a mission in mind, or probably a thought at least, that they know what they are consuming or they are going to consume, right? Even if you're not searching, आप browse भी अगर कर रहे हो तो आप click कर रहे हो, आप conscious एक you're making a conscious step to click to that video and probably consume it. That makes it super efficient for, let's say, the audience that I'm getting. Kind of an it's an action oriented audience, and plus it's more of refined audience. I know they came for this video. They made a conscious effort to click to that link and is consuming that content. So there are high chances to convert that audience. For that particular reason, this platform works like a magic. But this is not while saying all of this is not a same picture for every of the brands. For some brands, Instagram could be a better platform than YouTube. Could be, it is not a blanket statement to say where every brand can be, let's say, सभी brand के लिए YouTube ही best है ऐसा नहीं है. कोई brands के लिए होगा कि Instagram is more better than YouTube for them. But
majority of the product based brands that I have worked with, or probably service based brands that I have worked with, I have realized that YouTube is a better acquisition channel than the other social media apps. Right, right. So to like just to summarize that, basically audience has a purpose while they go to YouTube. Right. Like they know the why. Correct. Right. And I think I remember there is a series, basically a playlist on Boat's channel Okay. that basically describe all the features or all the problems, basically the FAQs that we ask, right? So that is how they are using. And another vertical that Boat has that I really like is the podcast that Aman Gupta does with other creators, Right. other celebrities, right? So yeah, basically brands are using it probably in a good manner, and I think there are more and more brands that is coming maybe by FOMO or whatever it is, but I think they are right now leveraging it. Cool, cool. Okay. So, like a lot of the YouTube channels that were creating wines or something like that, they've already shifted to podcast and they're performing really well. For example, Real Hit Talks, yeah, that is probably one of the biggest examples of this. Correct. And all those three hosts of the podcast themselves have mentioned it a lot of times, right? So, like, do you think that podcast on YouTube is becoming saturated, or maybe with founders like Nikhil Kamath and then Kunal Shah taking it forward with podcasting, it is actually evolving or giving, a star sort of thing to YouTube as a platform? I think podcast is yet to survive. Saturated तो बिल्कुल नहीं है. Why I'll say this? तो हमने tier 1, tier 2 audience तो अभी तक capture कर ली podcast से. There is still tier 3 and tier 4 audience which is new to this podcasting method. They are still new to consuming content through podcast. और जब वो market capture हो जाएगा ना, you will feel that the market is cluttered with podcast. ये होने ही वाला है. Anything that works in India is going to be cluttered. Why? Because we have I think highest internet population currently. Right. In a country where we have highest internet population, there will be higher creators as well. और वो creators जब ज़्यादा होंगे तो podcast वाला material हमें ज़्यादा दिखेगा. Same happened to Reels as well. When Reels started, or when TikTok started for that matter, I think Reels is a better example. We started seeing that boom of now you'll see every couple is a creator. Every new couple is a creator. Every guy who starts a business is a creator. Everyone, let's say every housewives or even people who are doing some work which is not mainstream is also a creator, because they have time to invest into platform. Then why not if something platform has to offer to them? In the world where there are becoming more and more creator, content is going to be obviously cluttered. वो होगा, but saturation पे तो बिल्कुल नहीं है. I think we are going to see some of the best of the things going to happen on YouTube real soon with podcasting. तो अभी भी मैं home screen पे जाता हूँ जब YouTube के, तो I see like 10 में से 2 तो videos are podcast currently. ये 5 तक भी जाएगा, which is very sure of. If you see the podcast consumption in US, that has been real great. Not just video podcast but audio podcast as well. We will also see that shift basically here, but हमारा video podcast ज़्यादा चलता है than audio podcast. So yeah, that will happen. Look at the landscape, how it is changing. I mean, Ashneer Grover, who used to be an amazing businessman, is interested now to create content and be famous and called for this events and all. And you will see his reel as well that he's earning more becoming a creator than he was as a founder. Founder. Now, what world we are living into? Right. This is just amazing, right? To get this kind of money, and we have seen like multiple creators as well getting paid more than even Bollywood actors and actresses. That's true, yeah. Because they come with an audience. They come with a distribution, and that's why people are ready to invest into them. So basically, whenever somebody is going, or maybe as a brand, brands keep on asking that what how you guys would crack the algorithm for us as a company. So what according to you is YouTube algorithm? यार बहुत ही सिंपल है. YouTube algorithm तो कोई क्रैक कर सकता है ऐसा I do not know. सब लोग बोलते हैं कि this thing will crack the algorithm, but अगर आप वो सारी टिप्स देखो ना, कितने भी वीडियोस है सारे देख लो, they will all focus on what your audience needs.
राइट? तो अल्टीमेटली हम एल्गोरिदम को हैक नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस देख पाए उस चीज को. इट्स अ फैंसियर वे टू से इट दैट वी आर हैकिंग द एल्गोरिदम, but ultimately what we are trying to do is we are making you optimized in a way that your audience can easily find and consume the content that you have to deliver. That is the end game. When it comes to your question कि brands ये पूछते हैं कि आप क्या करोगे different, तो मैंने 2-3 problems हमेशा brands में देखे हैं. एक तो उनका disconnect होता है from the content that they are creating with the platform audience. है ना, हर एक प्लेटफॉर्म की ऑडियंस भी अलग होती है. इंस्टाग्राम की ऑडियंस अलग तरीके से बिहेव करती है, यूट्यूब की ऑडियंस अलग तरीके से बिहेव करती है, अलग कंटेंट भी डिमांड करती है. द ब्रांड हैज एन पर्सनालिटी कि मैं तो यार इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं तो इतना अच्छा बोलता हूँ, मैं तो इतना अच्छा ये करता हूँ, फिर क्यों मेरे व्यूज नहीं आ रहे, है ना, मेरा कंटेंट सबसे बेस्ट है. यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म डोंट केयर व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू ब्रिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. इट्स द ऑडियंस हु डिसाइड्स whether your content is going to work like a gem or not. Simple example to it is करण बजाज का यूट्यूब चैनल, हु इज अ फाउंडर ऑफ व्हाइट हेड जूनियर. उन्होंने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस रखे ऑन स्टार्टअप्स, एमवीपी, हाउ टू गेट योर स्टार्टअप फंडेड, बहुत सारे वीडियोस. जैसे कि आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की चैनल को देखोगे, वहां पे देयर आर मल्टीपल great personalities who have done like great work into corporates have come and created their lessons or their speeches on their YouTube channel, but they are not getting consumed. The only issue is that the audience who is consuming it also wants some masala into it. Maybe something that they can relate to, maybe something that they can laugh on, or probably that can inspire them. While equally so that's why you see a lot of edtech channels as well. If you see, there's a lot of masala going on, spice. There's a lot of spice going on. Let's say one a faculty is speaking about another faculty. There's fun into the class. You see this experimental videos which are getting extremely viral, like absolutely. fun learn and fun channel and all of that you see. Why are they getting extremely famous? Because while the faculty is teaching, they're also interacting and engaging the audience, which is making their interest completely devoted to the content that that personality is delivering. And that's why that content works and the other content doesn't. So basically, more than the content, how you package the content matters more. Yes, absolutely. Cool. So now, like coming to the SEO part of things, SEO is dead. ऐसा बोला जा रहा है. very What's true. your take on the same? यार SEO डेड है भी, नहीं भी है. नहीं भी इसलिए, सो मैं इसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ. तो बैक इन 2020 जब मैंने YouTube सीखा, SEO बहुत इंपॉर्टेंट था. बहुत मतलब इतना इंपॉर्टेंट कि अगर मैंने वो कीवर्ड एग्जैक्ट वे में फ्रेम नहीं किया, अगर उसे ऑप्टिमाइज नहीं किया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला, टैग्स में नहीं डाला, माय वीडियो, देयर आर लेस चांसेस ऑफ माय वीडियो टू गेट रैंक ऑन some of the keywords that I was trying to rank it. Cut to short, today what has happened was the algorithm has become, the crawler has become really smart. Crawler in the sense जो identify करता है कि ये content क्या है. This example, अगर आप the recent tragedy that happened, अगर आप उसे सर्च करोगे YouTube पे, ओडिशा ट्रेन, तो एक सबसे पहला कीवर्ड आता है ओडिशा ट्रेन हादसा, है ना. हादसा बिकॉज वी स्पीक इन अ वे, वी स्पीक इन दैट लैंग्वेज. हम एक्सीडेंट नहीं लिखते, हम हादसा लिखते हैं या बोलते हैं. तो लोगों ने वही टाइप किया और वो कीवर्ड टॉप पे चला गया. बट इवन इफ यू सर्च दैट कीवर्ड, द वीडियोस दैट आर रैंकिंग आर ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट. Why? Because now that AI or crawler is able to understand that accident and hadsa is a synonym in different languages. So that has happened. Second, even so, let's say YouTube never wanted कि ये काफी टेक्निकल हो उनके प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना. सी अंडरस्टैंड, एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको चाहिए कि मेरे प्लेटफॉर्म को यूज करना सबसे इजी होना चाहिए फ्रॉम अ क्रिएटर्स पॉइंट. वाई? बिकॉज अगर मैं तन्मय भट्ट को बोलूँ कि बिफोर यू अपलोड अ वीडियो, मेक श्योर कि आप है ना 15 मिनट स्पेंड करो SEO पे, he'll not do it. Why would he be on YouTube? He would rather be on some other platform and make, जहाँ पे वर्क बहुत इजी है. जैसे रील्स रिकॉर्ड किया, कुछ भी पोस्ट कैप्शन डाल दिया एंड आई एम पोस्टिंग इट, राइट. बट व्हेन इट कम्स टू YouTube, that's not the same scenario. वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी. अब SEO डेड है या नहीं है, उसका रीजन है डेड तो अभी भी नहीं है. व्हाई? बिकॉज आपके बहुत सारे और
sources of views is dependent on how you optimize your video. जैसे कि आपके रिकमेंडेशन, आपको किसी के रिकमेंडेशन सेक्शन में जाना है, so let's say if there is one trending video on a particular topic, और आपने similar topic पे video बनाया and you want to get into the recommendation section of or suggested section of this particular video, how would you do that? That's only possible while you copy or probably understand from that particular video's SEO ki this is working for them, so let me try to optimize it accordingly. So that's how SEO is working. Yes, the title wala things that used to work, the front end keyword, back end keyword, primary keyword, secondary keyword, all of that is going away, also because YouTube is now able to understand कि आप क्या बोलते हो वीडियो में. From that they are able to understand कि हाँ, there is enough this keywords is used multiple times in the video, so this must be about this particular topic, so let me rank it. Also they are able to understand the behavior in the sense कि अगर ध्रुव राठी वीडियो बनाते हैं कोई टॉपिक पे and instantly audience सर्च करके अगर वो रैंक नीचे भी कर रहा होता है तो भी जाके ढूंढ लेता है. तो YouTube now understands the behavior कि ये तो नीचे भी जाके ढूंढ रहे हैं, तो why not rank that video and make it easy for the users to find it. So that's how SEO game is changing. In 2020 अगर आप मुझे ये पूछते तो मैं बोलता कि नहीं, ये SEO ही है सब कुछ YouTube के लिए, because वहाँ पे I have multiple videos that has only worked because I had optimized that. वरना मेरी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं थी जो कोई कंपटीटर को या कोई क्रिएटर से compete कर पाए, but because I optimized it in a certain way, इसलिए that video worked. Now it has more become human than technical. YouTube is more becoming human कि human कैसे react कर रहे हैं, और audience, how is your audience reacting, और उस तरीके से चल रहे हैं. Yeah, so there's a saying on YouTube that rather than having an SEO approach, have a humanly approach. Right. Yeah, Very cool. true. So I was just saying that SEO was that popular in 2020 that first time when I had a chat with you, the number that I saved is with Rahil SEO. And it is still the same number. Right. Yeah. So like if anyone wants to start their career as a YouTube strategist, then what should be the ideal steps, or maybe like the first few steps in order to get started with YouTube strategist? So YouTube strategist, basically, there's no defined role when it comes to YouTube strategist. You will have to do anything and everything that helps your client's channel or your company's, your brand's channel to grow, right? To get more consumption done on the platform on so let's say YouTube. तो strategist का job बहुत simple है. उसको just make sure करना है कि audience ज़्यादा से ज़्यादा वो content को आके consume कर पाए. How do we do that? Is by several of the ways. When it comes to becoming a YouTube strategist, your problem could be तो multiple areas, जैसे हमने बात की थी podcast के start में कि there are multiple jobs when it comes to a YouTube channel. जैसे scripting एक job हुआ, टॉपिक फाइंडिंग एक जॉब हुआ, कंटेंट क्रिएशन एक जॉब हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन में काफी सारे जॉब है. तो ये सारे जो जॉब हो रहे, इस सब में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो सकता है, लिमिटेशंस हो सकती है, ड्रॉबैक्स हो सकते हैं फ्रॉम अ क्लाइंट्स स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू और एनी क्रिएटर्स स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू. एज अ स्ट्रेटेजिस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस गैप्स एंड यू नीड टू हेल्प क्लाइंट ओवरकम दैट. सम ऑफ द वर्क, सो लेट्स आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि क्लाइंट के प्रोडक्शन में ऐसा हो रहा है कि दे आर स्ट्रेचिंग द वीडियो लिटिल बिट मोर देन रिक्वायर्ड, एंड यू कैन सी एज अ स्ट्रेटेजिस्ट फ्रॉम द बैक एंड दैट ऑडियंस इज ड्रॉपिंग एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड आपका एवीपी इतना अच्छा नहीं बन रहा है और एवरेज परसेंटेज व्यू ऑन यूट्यूब. दैट मीन्स कि यूट्यूब के वीडियो को कोई पूरा नहीं देख रहा है, तो कहीं पे बेसिकली ऑडियंस निकल रही है, और अगर वो ऑडियंस निकल रही है तो यू नीड टू मेक श्योर टू आइडेंटिफाई दैट गैप एंड फिल इट विद समथिंग एज अ फिलर, और प्रोबेबली मेक इट शार्प इनफ कि वो ऑडियंस वहां से remove now. That's the work of a YouTube strategist. This was just an example with regards to content. There could be problems with optimization, that could be problems with thumbnail, that could be problems with let's say scripting as well. I've identified that gaps as well into a client. So as a strategist you need to identify this gap and fulfill for the client. That's the role that you get as a YouTube strategist. Now what all goes handy to become a great YouTube strategist is to understand your audience really well, client's audience really well. So कई बार क्या होता है ना कि हम एक परसेप्शन लेके चलते हैं और वहां पे वो परसेप्शन से ही उसको ऑप्टिमाइज करने लगते हैं चैनल को कि पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा है सर, आप भी पॉडकास्ट कर लीजिए,
that is one of the things that I see a lot into this industry. Mm-hmm. But that's not true. One medicine cannot work for every of the disease, right? वैसे ही हर एक क्लाइंट का भी एक स्ट्रेंथ होता है और एक वीकनेस होगी. सो बेसिकली यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस गैप्स एज अ स्ट्रेटेजिस्ट. फॉर एन एग्जांपल, कई क्लाइंट्स आपके होंगे जो एज अ पर्सनैलिटी बहुत अच्छे हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा. कई होंगे दैट कम विद अ नॉलेज, a bundle of knowledge. You need to make sure कि जो क्रिएटर अच्छा है उसको नॉलेज अच्छी मिले अपने वीडियोस में शेयर करने के लिए, और जहाँ पे वो नॉलेज वाला बंदा है वो अच्छे से क्रिएट कर पाए वीडियोस को. To fill that gap, that is the role that an strategist get. So answering to the question कि क्या handy जाता है, the first thing is to understand the client and the audience. ये सबसे initial, सबसे baseline चीज है for any strategist to work on. मैं हमेशा अपने क्लाइंट को कहता हूँ कि फर्स्ट 1 month you won't see anything happening on your channel. Why? Because the first 1 month is for me to understand कि आपके गैप्स कहाँ पे, आपके प्रॉब्लम एरिया कौन कौन से हैं, एंड कहाँ मैं कैसे उसे फुलफिल कर सकता हूँ. मेरे साथ ये चैलेंज भी होता है कई बार कि क्लाइंट पूछते हैं आप क्या करोगे डिफरेंट, व्हाट विल यू डू टू दिस यूट्यूब चैनल. तो हर बार हम स्टैटिस्टिक्स से, डेटा से, जो बाहरी इंफॉर्मेशन है उससे हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि मैं ये रिपेयर कर दूंगा, मैं ये सही कर दूंगा, मैं इसको ऑप्टिमाइज कर दूंगा. बट दोज ऑल ऑफ द आंसर्स आर पार्शियली करेक्ट. असली इंफॉर्मेशन आपको तभी पता चलती है जब आप यूट्यूब चैनल पे एक्चुअली वर्क करना शुरू करते हो. तभी आपको पता चलता है कि अच्छा ये स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है, वीडियो कोई और बना रहा है. सो स्क्रिप्ट जो लिख रहा था वो तो पर्सपेक्टिव उसका पर्सपेक्टिव से बना रहा है, and the video who's shooting that video is just reading out that script or probably not resonating with the same information or the same way that the script was created. और वो गैप से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है फाइनल वीडियो पे. दूसरा एक बहुत प्रिविलिंग चैलेंज मैंने देखा है कि हर कोई है ना एक्सपर्ट होता है when it comes to YouTube before they have an expert at their place. तो हर किसी का सजेशन होता है. CEO का सजेशन होगा, मार्केटिंग टीम का सजेशन होगा, someone working at the sales का सजेशन होगा कि ऐसे वीडियोस हमें बनाने चाहिए, है ना. सब कोई, so everyone is expert before an expert arrives to working on YouTube channel. तो ये मैंने काफी ब्रांड्स में देखा है. इनफैक्ट 2 of the initial brands that I started working on, or rather 3, उसमें भी ये चैलेंज ही थे कि they were blindly too many people, like opinions, and it just create a lot of buzz for the YouTube strategist. Correct. पहला I think first month तो यही समझने में निकल जाता है which team member is going to work on what, and then taking their suggestion. Obviously you are also coming with ideas, so sometimes I also felt that while we share few strategies with our clients, our strategy comes in second place because we have to consider there at the first place, and then the whole system just takes a back seat, and then we are figuring out things. So there's obviously a common pain that we all go through. Correct. But ये clear हमें बहुत पहले ही कर देना है client से कि it may sound little rude while we come up as someone कि मैं I'll create the content calendar with my knowledge of what I think, है ना. 1 महीना मैं आपका फॉलो करूंगा, उसके बाद जो कंटेंट कैलेंडर होगा वो मेरा होगा, right. और वही सबको फॉलो करना है. if there is any changes, if there is any betterment that can be done, I'm obviously open for every suggestion, but I'm also making their job easy. मैं ही कैलेंडर बना के दे रहा हूँ तो दे विल बी हैप्पी. हाँ, हर कोई को पसंद है कि उनका काम डेलीगेट हो जाए एंड वर्क हो जाए. तो मैंने काफी सारे मार्केटिंग मैनेजर्स को देखा है, हाँ राहिल आप बना दो कैलेंडर, है ना. Now this I take as an opportunity. ये थोड़ा प्री वर्क करना पड़ता है, but then entire boat sails easily then the next month, क्योंकि आप ही के तो कंटेंट बन रहे हैं ना. Now you have the power, you have the hold, क्योंकि month end में while they have to pay, they also see the numbers and they I mean मैंने जो एस्टिमेशंस लगाए हैं वो नंबर्स तक हम नहीं पहुंचे. तो there has been multiple reasons जहाँ पे मेरे भी कुछ फॉल बैक्स हो सकते हैं. बट अगर मेरे कंटेंट को ही नहीं परस्यू किया, अगर मेरे स्ट्रेटेजीज को भी फॉलो नहीं किया, देन मैं उनको भी क्वेश्चन करता हूँ कि पे भी क्यों कर रहे हो फिर मुझे, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर मनी. अगर यही करना है तो get someone will just follow your instruction and get things done, but that didn't made you move, right? That's why you came to me. So now let's consider it, and अगर नहीं होता तो I am ready to take the blame, right? So why not? Right. So like coming back to the question, basically what are the steps that a YouTube anyone who wants to become a YouTube strategist, how should they start?
ओके, बहुत सिंपल है। अगर यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट बनना है आपको, पहले तो आपको द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज अ ग्रेट क्लाइंट। व्हाई डू आई से इट इज बिकॉज आपकी जो एक्सपर्टीज होती है इनिशियली, वो आपके बैकग्राउंड से भी बहुत कनेक्ट करती है। मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस समथिंग दैट यू आर फैसिनेटेड अबाउट, समथिंग यू नो एज अ पर्सन, उसके कारण आप उन्हें स्ट्रेटेजी दे पा रहे हो, है ना। जैसे कि मुझे पता था एजुकेशन के बारे में, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू स्केल दिस कंसल्टेंसी ऑन एन एजुकेशन लेवल मोर, क्योंकि मैंने एजुकेशन सेक्टर में वर्क किया था। राइट नाउ इट बिकम्स इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट बॉल गेम। सो अगर आप कोई फील्ड से आ रहे हो या आपका कोई इंटरेस्ट है, लेट्स से सपोजिंगली योर इंटरेस्ट इज इनटू कार्स एंड ऑटोमोबाइल, तो आपको पता होगा कि इसकी ऑडियंस कौन से कंटेंट पे कैसे रिएक्ट करती है। दैट मेक्स योर जॉब इजी एज अ स्ट्रेटेजिस्ट टू consult your client, right? You know where you are, what you are talking about, right? That's the first thing that you need to एक understanding, basic understanding होना चाहिए about what you are going to consult. Second is, अगर नहीं भी है ना ये, तो take some time out, एक week ले लो, और आपके connection में जितने भी लोग हैं into that field. So let's say if I get a real estate client, I'll make sure that I call every number in my phone who is working into real estate and ask them about their pain points. यहाँ से मैं कुछ कनेक्टिविटी बना दूंगा फॉर एटलीस्ट टू इम्प्रेस द क्लाइंट। अब जब मैं पिच करने जाऊंगा ना, यही पेन पॉइंट्स जो इनसे सुने हैं उसी को थोड़ा ग्लोरीफाई करके उसे पोर्ट्रे करूंगा, एंड दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, ही नोज व्हाट ही इज स्पीकिंग। दैट मेक्स इट इजी फॉर द क्लाइंट टू आल्सो ट्रस्ट ऑन यू। नाउ हाउ डू यू फाइंड सच क्लाइंट्स? ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट तो बनना है मुझे, बट क्लाइंट्स कैसे फाइंड आउट करूं? वन ऑफ द बेस्ट वेज टू फाइंड क्लाइंट्स इज टू शेयर इंफॉर्मेशन और टू शेयर knowledge That on is platforms again by like creating content. So LinkedIn, Instagram वगैरह पे content create करो about what brands do wrong, how do you suggest them and all of that. दूसरा strategy है जो हमारा हमेशा रहता है, cold reach out. बट cold reach out blindly मत करो किसी को भी। मुझे ये कंपनी पसंद है इसलिए मुझे उसको cold reach out करना है, that's the worst thing to do. Why? Because तुम्हें पसंद है, बट क्या उन्हें YouTube पसंद है? Do they consider YouTube as one of the platforms? क्या उन्हें सही में इन्वेस्ट भी करना है उस चीज में? नहीं करना है उन्हें। तो अंडरस्टैंड दोज कंपनीज हु आर ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट बट आर नॉट एबल टू फुलफिल इट। कैसे पता चलेगा? आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे उनके, फर्स्ट टू सी दैट द कंपनी इज मीडिया शाई और नॉट। अगर नहीं है, और कंपनी के पास पैसा है, रेवेन्यूज है टू स्पेंड ऑन यूट्यूब, बट दे आर नॉट डूइंग इट, और प्रोबेबली दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द गैप बेसिकली कि व्हाट यूट्यूब ऑडियंस वांट्स। वो कैसे पता चलेगा? आप उनके वीडियोस पे जाके देखोगे, वीडियोस पे एफर्ट्स दिखेंगे आपको, थंबनेल्स में भी अच्छे लग जाए आपको, या कंटेंट अच्छा लग जाए कई बार, पर गैप्स भी दिखेंगे साथ साथ में। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू फाइंड सच क्लाइंट्स इज कि कंसिस्टेंसी देखो। अगर उन्होंने लास्ट मंथ या 2-3 महीने पहले या 6 महीने पहले भी अगर कंटेंट रखा था कंटिन्यूअसली फॉर लेट्स से एटलीस्ट 10 videos, then they want to consider it as a platform but it didn't work out for them, then you become one of the best person for them to be hired on a strategic role to get their mission accomplished. So basically अगर यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक तो होता है कि आप या तो गैप आइडेंटिफाई कर लो, किसी की चैनल ऑलरेडी चल रही है, आप उन्हें बोलो कि यार यू आर रनिंग ऑन सर्टेन नंबर्स, आई कैन do this to double it or probably to increase the numbers. ये भी बहुत अच्छा चल जाता है because I'm already working on something. अगर वो अच्छा जा रहा है और अगर कोई बोल रहा है कि मैं उसको और अच्छा कर सकता हूँ, then why not bring it on. Give me your suggestions and I'll get it implemented right away and आप ही आ जाओ on board. So ये सारे जो type of clients है जिन्होंने start नहीं किया, जो start करे but workout नहीं किया, या जिन्होंने start करके workout भी कर रहा है but उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे, try to identify this kind of clients. That is one. Second, वो client is कि किसी एक ने इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर लिया है. So let's say for an example, वही इलेक्ट्रिक ईवी वाले ही व्हीकल लेते हैं कि ओला ने बहुत अच्छा कर लिया, तो मैं सीधा ईथर के पास जाऊंगा. Are you also thinking of doing something on YouTube? Then probably we could help you. वैसा करके. So this is the type of clients that you need to look out for. और ये काफी easy है. It's just that you need to niche down on what are the niches that are working on YouTube really well right now. उसमें से कौन सी कंपनीज उसको कनेक्ट कर सकते हो आप डॉट्स वो कंटेंट के साथ. पहले तो समझो कि कंटेंट कैसा चल रहा है यूट्यूब पे, है ना. वो यूट्यूब पे कंटेंट देखते देखते ट्राई टू फिगर आउट कि ये कंटेंट कौन से निश कंपनीज के लिए भी चलेगा. सो लेट्स से आपने समझा कि पॉडकास्टिंग बहुत अच्छा चल रहा है अभी यूट्यूब पे. नाउ यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स कि पॉडकास्टिंग कौन सी कंपनीज के लिए अच्छा चल सकता है एज अ कंटेंट. नाउ यू नीड टू गो टू आइडेंटिफाई दोज कंपनीज, रीच आउट टू देम
and with a proper plan in place. ऐसे कोल्ड रीच आउट पहले तो करना है, मैसेज करना है कि आई थिंक दैट वी कैन डू ग्रेट जस्टिस टू योर यूट्यूब चैनल एंड वी कैन probably fill the gap of identifying new customers and converting them to your product pages and all of that. Always keep a language where you are going to increase their revenues, acquisitions or sales. अगर ये लैंग्वेज नहीं रखा ना तो कोई भी सीईओ एंटरटेन नहीं करेगा ये रिक्वेस्ट को, क्योंकि किसी के पास भी पैसा नहीं है टू वेस्ट ऑन जस्ट ब्रांडिंग है, बट वो लेगेसी ब्रांड्स के पास है जहाँ पे उनके पास ऑलरेडी सोर्सेस है टू गेट देम सॉर्टेड. Too many agencies. हाँ, too many agencies are taking care of it. Few of In-house the team भी है, सब है. हाँ, very big this creators strategists are also there जो काफी बड़ा कुछ नाम कर सके अपना इस इंडस्ट्री में. They'll directly call them and get them on board. Why would they want to try it to someone who is new to the industry? तो ये सारे pointers हैं which will help a strategist to find a client. And जैसे मैंने बताया, the initial work is to just identify the audience, वो किस तरीके से content consume कर रही है और क्लाइंट का स्ट्रेंथ क्या है, ट्राई टू मैच दिस डॉट्स. दिस इज इजी. क्या हमें समझ आना चाहिए, यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म समझ आना चाहिए. वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लर्न द हार्ड वे इज क्लाइंट कुछ भी पूछ सकता है. क्लाइंट रैंडमली पूछेगा कि ये वीडियो क्यों नहीं चल रहा है. इंटरव्यू मतलब द फर्स्ट इंटरेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, उसी में पूछ लेगा कि हाँ आपको क्या लग रहा है. Not even monthly review, in the initial start itself, while you are pitching the client will ask you, might ask you कि ये वीडियो क्यों नहीं चला, what do you think can be improved in this video. And आप कभी भी है ना, you have to be politically correct as well कि content तो आपका शायद से और अच्छा हो सकता है, ऐसा directly आप नहीं बोल सकते, but you can, so let's say if someone who is self creating content, अगर आपने उसे बोल दिया कि आपका content ही अच्छा नहीं है, then it may work adversely, and you know that if you get crack as a client, आपको इन्हीं से काम करवाना है, इन्हीं से content बनवाना है. So you need to be politically correct as well, but you need to identify those gaps and present it accordingly कि ये सारे gaps है मुझे लग रहा है in this video. और अगर नहीं पता है ना तो don't try to win that call for that sake कि आप कुछ भी बोल दो, है ना, ये मत करना कभी भी. Take a time out, tell them that मैं कॉल के बाद इसको 10 मिनट एनालाइज करना चाहूंगा, उसके बाद आपको बता दूंगा. अभी तक मैंने ये गैप्स आइडेंटिफाई किए थे, बट आपने सिंस ये वीडियो के लिए पूछा है तो आई वुड स्पेसिफिकली वांट टू डीप डाइव ऑन दिस. That's cool. So basically, like to summarize this, YouTube strategists understand the human psychology of the target audience of that particular brand he or she is going to work with. Right. Cool. That's actually a crazy insight for the folks starting out.